तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद जनरल एनाटॉमी. नाउ दिस इज द बेसिक, जहाँ से मैंने आपको बोल दिया है कि दिस इज जीरो टू हीरो सीरीज. तो मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा, जहाँ पे क्लिनिकल उसका जो कोरिलेशन होगा वो क्लिनिकल कोरिलेशन भी हम वहाँ पे कर लेंगे, और जहाँ पे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिफरेंट सब्जेक्ट से आपको इसको रिलेट करना होगा वो भी हम कर लेंगे. ओके, सो इंटीग्रेट भी हम कर लेंगे. सो हैव फेथ इन मी एंड लेट्स गो अहेड. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो जनरल एनाटॉमी से हम शुरू कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मेरा एनाटॉमी को अप्रोच करने का तरीका सीधा सीधा ये है कि पहले आप थ्योरी पढ़ें और उसको फिर उसी के बाद रिवाइज करने के लिए विजुअली उसको आप अपने ब्रेन में इम्प्रिंट कर लें. तो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट इट. एवरी क्लास जो मेरी थ्योरी की होगी उसके बाद हम 3D में उन सारी नॉलेज को, उस सारे थ्योरी को रिवाइज करेंगे, एंड दिस विल बी आवर वे टू गो अहेड. ओके, सो जनरल एनाटॉमी से शुरू करते हैं, बोन से बात करते हैं. नाउ सी बेसिक सवाल. अब ये सवाल हर कोई आपसे पूछता है. हाँ, बचपन से हम पूछते आ रहे हैं कि हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर. सो देखो, मेरा ये पहले भी तरीका रहा है. मैं पहले भी पढ़ाता था बच्चों को, तो मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस करता था. नाउ दिस इज यूट्यूब, आई नो, बट आप जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, और मैं पूछूंगा बहुत बार वो क्वेश्चन, तो आप अपने जहाँ पर भी हो पॉज कर लेना. अगर कोई टफ क्वेश्चन हुआ, नहीं तो ऐसे ही आंसर करते रहना. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर. सो उसके पहले मैं आपको उसके पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस चैप्टर में आज क्या पढ़ने वाले हैं. राइट. सो when it comes to general anatomy, or when it comes to bones, we'll talk every single thing about bones. Right. तो बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज जो बोन्स की, इसके अलावा आपको और पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है. देखो, मैं जब नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो आई एक्चुअली सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस ऑल्सो, वेरियस क्यू बैंक्स ऑल्सो. सो ऑल दैट नॉलेज, कंबाइंड नॉलेज जो है वो मैंने अपने नोट्स में उतार दिए. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो विद मी. Okay, so let's talk about it. So in this chapter what we will talk about is first the easiest of all, कि कितने आपके टोटल बोन्स हैं, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ये क्या होता है, उसमें कितनी बोन्स होती है. विल टॉक अबाउट इट. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट सिंस वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, तो यार कर लो, है ना. एट द एंड ऑफ द सीरीज आपका टाइम यूटिलाइज ही हो जाएगा, और आप एनाटॉमी में सुपर स्ट्रांग होने ही वाले हो, तो हर एक चीज करना जरूरी है. ओके, सो देन वील गो इनटू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में विल टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट पार्ट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कैंसलस और स्पंजी बोन, है ना. व्हाट काइंड ऑफ कोलेजन इज देयर, इनफैक्ट व्हाट काइंड ऑफ कोलेजन्स आर देयर इन आवर बॉडी, वो भी हम अलग से एक टेबल बना लेंगे. बोन्स में तो आपको पता ही है टाइप 1 कोलेजन सबसे ज्यादा होता है, बट स्टिल विल रिपीट इट, डोंट वरी, है ना. फिर बोन्स किससे मिलकर बनती है, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर पार्ट ऑफ बोन्स. बाय द वे, माय प्रिफर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश 90% ऑफ द टाइम. समटाइम्स आई विल यूज हिंदी, है ना, तो इंग्लिश हो जाएगा, तो it won't be a problem for any kind of student. Okay, and then we'll talk about the classification of bones. Now classification of bones are of various kinds. Okay, shape के हिसाब से आप classify कर सकते हैं bones को कि किस किस shape की होती है. development के हिसाब से आप कर सकते हैं, you know, ossification and all. We'll talk about that also. Okay, so classification types. लॉन्ग बोन्स के लाइक बोन्स के टाइप्स, लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है. देर आर एसेसरी बोन्स, देर आर सिस्मोइड बोन्स. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. आई विल शो यू द एक्सरे पिक्चर्स, आई विल शो यू द इलस्ट्रेशन, एंड यू विल बी गुड टू गो आफ्टर दैट. ओके, नाउ नॉट जस्ट बोन्स के डिफरेंट टाइप्स, है ना, लॉन्ग बोन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं. विल टॉक अबाउट दैट. टिपिकल बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, है ना. सो यू कैन सी वी विल गो इनटू डिटेल्स. हम बेसिक से शुरू तो करेंगे, पर हम पूरा डिटेल करते हुए जाएंगे. राइट. सो टिपिकल, मिनिएचर, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन. मैं ये क्यों आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो कि जब हम वो पढ़ रहे होंगे तो आपको कहां कहां पे फोकस करना है. ओके, सो दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Then we'll talk about bones की layers. Okay, so very important is periosteum. इसके ऊपर बहुत questions आते हैं, whether you give FMGE, NEET, PG, whatever. Okay, so we'll talk about the layers and what is the clinical correlation of periosteum. We'll talk about that also. Okay, then we'll talk about obviously ossification के बिना कैसे काम हो सकता है. Okay, so we'll talk about membranous ossification, cartilaginous ossification. What do we mean by that? Membranocartilaginous ossification. What do we mean by that? Okay, then we'll talk about parts also. That is fine.
ये तो बहुत easy है. Epiphysis, diaphysis, metaphysis, we'll all talk about it. Okay, and then epiphysis के types, they are very important. Atavistic क्या होता है, aberrant क्या होता है, we'll talk about all those things. And finally we'll also talk about the blood supply, the nutrient artery कहाँ से run करती है भाई, किधर होती है, उसका जो भागने का तरीका क्या होता है, उसका mnemonic क्या होता है, we'll talk about it. Okay, so this is the overview. Shall we proceed? ठीक है, चलो. So पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स की. ओके, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक योर कंप्लीट एनाटॉमी, ऑल द स्केलेटन, है ना. विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है. बट आज हमको बात करनी है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स आर देयर. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो व्हेन वी राइट इट डाउन, है ना, आप अपने जहाँ पे भी बैठे हैं आप अपने मन में वो आंसर दे सकते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट इन एडल्ट्स, राइट, let's talk about that. In adults, 80 bones are present in the axial skeleton. We'll talk about it. Okay, क्या axial होता है, क्या appendicular होता है, even though I know you know by now, but we'll talk about everything. So अभी मेरे साथ चलो कि इन एडल्ट्स 80 बोन्स आर देयर इन योर एक्सियल स्केलेटन, है ना, जो बीच में आपका जो स्केलेटन है, योर मिड स्केलेटन, दैट इज योर एक्सियल स्केलेटन अभी के लिए, ठीक है. देन हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन? सो सेम थिंग, 126 बोन्स आर प्रेजेंट इन योर अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, तो अब मैथमेटिक्स मेरा तो कमजोर है, पर तुम कर लो. टोटल बोन्स कितनी होती है भाई? टोटल बोन्स एज यूजुअल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट, 206 बोन्स आर देयर. इवन तो किसी ने अगर डेडपुल देखी है तो 207 बोन्स भी हो सकती है, उसने बोला था. ओके, सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट. सो इन एडल्ट्स 80 बोन्स आर देयर इन योर एक्सियल स्केलेटन एंड 126 बोन्स आर देयर इन योर appendicular skeleton, your shoulder girdle, your upper limb, your lower limb. This comes in your appendicular skeleton, but we'll do it, है ना, जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे. अभी आप चलते चलो. ओके, सो नाउ इफ यू हैव टू, अगर हम इसको वो डिवाइड भी करना चाहें, ओके, कि भाई 80 बोन्स होती है तो उसमें भी क्या 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 क्या, तो देन आई कैन राइट इट डाउन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन. सो लेट्स मेक अ टेबल. Okay, here we will write region, here we will write number, and here we will write bones. Okay, how many bones are there? So if we say skull region, right, you can see skull region. So if we say skull region में हमारी total number of bones are there, 28 bones are there. उसमें भी if we divide it further, तो 28 bones में भी cranial bones are there, your facial, right, facial bones are there, and finally your, who can forget them, है ना, auditory ossicles are there. Okay, how many? We can write it down. 8 are cranial bones, 14 are your facial bones, and 6 are your auditory ossicles. This is how it goes. Okay, तो याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, but it's worth to understand it from the basic itself. Okay, तो स्कल में ये bones होती हैं. Then if we say what other region, then you have hyoid region, you have one number of bone, and that itself is nothing but your hyoid bone, है ना. We are doing everything, so we have to do everything. Okay, then if we say vertebral column, a good old question, है ना, अब तो पूछते भी नहीं है मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन. ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम इफ यू टॉक अबाउट, देयर आर 26 बोन्स इन टोटल. इफ वी से सर कौन कौन सी, देन वी कैन राइट इट डाउन. वी हैव टू राइट cervical vertebrae. Okay, they are 7 in number. Then we have thoracic, right, thoracic vertebrae पीछे की तरफ, that is your 12 in number. Then we have lumbar, which are 5 in number. Then we have
sacrum 1 है ना, fuse and coccyx, that is also 1. Okay, so this is your vertebrate column bones. ठीक है, let me just add a page. Okay, so this is done. Now इसको फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर एक बार इसको पढ़ के जाना. इट्स गुड टू, इट्स वर्थ इट टू रीड इट वंस, है ना, इट वॉन्ट हर्ट. सो लेट्स गो अहेड विद आवर टेबल. Not that important, but still you can remember it. If we talk about thoracic cage, right, then we have 25 number of bones there. If we have to write names thoracic cage mein, then ribs are 24 out of it, and as you all know, sternum is 1. Okay, so thoracic cage में आपकी 25 जो है number of bones are there. Then we go about this, we talked about this. Now we have to talk about total axial skeleton. I mean this whole complete axial skeleton. Already what we did is 80 bones in total. Okay, now let's talk about other, which is appendicular, and we talk about pectoral girdle, है ना. Don't worry, I will show everything in 3D as well, है ना. तो हम सब देख के इसको याद तो करेंगे ही, but theory part is also important. So let's just finish it. So pectoral girdle में आपकी you have 4 bones, and that is clavicle and scapula. They are 2 in number each. Okay, so pectoral girdle भी आपके appendicular skeleton में आता है. See, from here अगर आपके बोन के नंबर याद रखना नहीं रखना है, that is I will leave it up to you. But you can also understand, जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है, एनाटमी बिल्कुल ही नहीं आ रही है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, then you can understand कि what bones are there in your axial skeleton and what is there in appendicular skeleton. देखो कई बार आप ये कंफ्यूज कर जाते हो कि सर ये पेक्टोरल गर्डल है और आपका पेल्विक गर्डल जो है ये बीच में आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, तो क्या ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है? नो, एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया, स्कल बोन, फेशियल बोन, आपका थोरैसिक केज, आपका वर्टिब्रल. बट आपका ये जो पेक्टोरल गर्डल है, जो जिसमें आपका स्कैपुला, क्लेविकल एंड योर अपर लिम्ब इज इन्वॉल्वड, एंड आपका जो पेल्विक गर्डल है, जो नीचे की बोन है, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस एंड लोअर लिम्ब, दे ऑल कम अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, तो ये आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए. ओके, सो लेट्स गो अहेड. If we talk about upper extremity, okay, there are 60 number of bones are there, and उसमें भी अगर हम सबको पता है ना, humerus bone is there, right, arm, humerus bone, then radius and ulnar bone is there, forearm, right. So then your carpals are there, wrist, मेटाकार्पल्स है ना, हैंड में होंगे, एंड phalanges, राइट. एंड व्हाट आर द नंबर्स? सो ह्यूमरस इज 2 इन नंबर, रेडियस इज 2 इन नंबर, अल्ना बोन इज 2 इन नंबर, है ना, दोनों की बात कर रहे हैं. 16 इन नंबर, मेटाकार्पल्स आर 10 इन नंबर, phalanges आर 28 इन नंबर. ओके, गुड टू गो. लेट्स कंप्लीट इट, है ना. इट्स वेरी some part of anatomy is quite boring, okay, but information is information. Nevertheless, you should all remember all these things, okay. और अगर इसकी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो you can text me on the Instagram handle. Okay, let's go ahead. When we talk about pelvic girdle, let's talk about pelvic girdle, है ना. This comes under appendicular skeleton. So pelvic girdle में there are 2 number of bones and they are hip bones. ये आपको मालूम ही है ना. We'll talk about it when we'll discuss the pelvic girdle. Then we have lower extremities, right? Lower extremity, and in this also we have 60. Actually they both develop together, and we'll talk about the development of the extremities also when we'll talk about dermatomes, myotomes. Okay, so the same 60. and क्या क्या bones होती है? femur again same, tibia, fibula, patella,
tarsals, metatarsals and phalanges. Okay, how many? 2 2 2 2. Tarsals are 14 in number. Okay, if you have to remember, metatarsals 10, phalanges are 28. Okay, and hence your appendicular skeleton how many appendicular skeleton will have? 126 bones. So this is how you can remember it. Okay, तो bone numbers देखो, bone number of bones is not that important, but your basics should be clear, है ना, कि कितनी bones कहाँ होती है. थोड़ा एक बार आप पढ़ के चलोगे तो it will help you a lot. ठीक है, and then now you know कि axial skeleton मतलब बीच का स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन. एवरीबॉडी नो अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ अपर लिम्ब लोअर लिम्ब होता है, सबको मालूम है. लेकिन अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के साथ उनका जो गर्डल है ना, जहां से वो अटैच हो रहे हैं फ्रॉम टू द एक्सियल स्केलेटन, वो भी इंपॉर्टेंट है. सो पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, बोथ आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एंड एक्सियल स्केलेटन का मैंने बता दिया, स्कल बोन, फेशियल बोन, वर्टिब्रा, थोरेसिक एज, दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन. गुड टू गो, क्लियर है ना. तो बेसिक क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बोन्स. ओके, टाइप्स ऑफ बोन्स की हम बात कर लेते हैं. आपको मालूम ही होगा, अभी तक आप आंसर भी दे सकते हो कि सर कौन कौन से टाइप ऑफ बोन्स होती हैं. राइट, सो एवरीबडी नो. देखो यार, कुछ चीज़ें तो सबको मालूम होती है, बट स्टिल हम बेसिक से चल रहे हैं तो थोड़ा सा बेयर भी करो, है ना, कि सर बेसिक से जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आती है, जो बोरिंग लग सकती है, वो भी हम फिर से रिवाइज करते चलेंगे. क्योंकि जब मैं एडवांस जाऊंगा तो दिस ऑल विल कम बैक टू यू. ओके, एंड एवरीथिंग विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. तो चलो, अभी क्या हम बोल रहे थे कि एवरीथिंग विल बी अ केक वर्क फॉर यू. सो टाइप्स ऑफ बोन, है ना. तो टाइप्स ऑफ बोन पे अगर हम बात करें तो देर आर समथिंग नोन एज लॉन्ग बोन्स, है ना. अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूं. देन देर इज समथिंग नोन एज शॉर्ट बोन्स, राइट. देन देर आर समथिंग नोन एज फ्लैट बोन्स, राइट. देर इज समथिंग नोन एज इरेगुलर बोन्स, है ना, इरेगुलर होती है बोन्स. और ऐसे और भी बोन्स हो सकती हैं, हम और अलग अलग भी बता सकते हैं कि देर इज समथिंग नोन एज, अगर आपको शेप के हिसाब से ही बताना है तो देर इज समथिंग नोन एज न्यूमेटिक बोन्स ऑल्सो, है ना. उनमें आपको मालूम है मैक्सिला बोन्स वगैरह, आपको उसमें न्यूमेटिक एयर सेल्स मिल जाएंगे, उसमें स्पेसेस मिल जाएगी जहाँ पे एयर फिल्ड कैविटीज होती है. सो दे आर न्यूमेटिक बोन्स. नीड नॉट टू गो इनटू दैट, बट लुक एट दिस, राइट. सो दिस इज व्हाट आपके फ्लैट बोन्स होती है. अभी मैं एग्जांपल्स भी लिखवा दूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज सी फ्लैट बोन्स आर देयर लाइक योर फ्रंटल बोन. sutural bone is there which has suture in between, that is fine. Irregular bones are there like your vertebra. ये जो examples हैं they are very important, please remember this. Irregular bone, आपके vertebra जो है वो irregular structures में आती है. Then there is short bones, आपके carpal wrist bones है ना, आपके wrist bones, tarsal bones, they are short bones, right. Long bone very important, femur, humerus, they are long bones, है ना. And then sigmoid bone we'll talk इन डिटेल, है ना. आज के लेक्चर में हम डिटेल में उसके बारे में सिस्मोइड बोन और एक्सेसरी बोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग उसको छोड़ के चलते हैं. ओके, सो सिस्मोइड बोन इज समथिंग दैट विल टॉक अबाउट. बट यस, वन बिग एग्जांपल ऑफ योर सिस्मोइड बोन इज व्हाट, द बिग एग्जांपल इज योर पटेला. पटेला इज अ सिस्मोइड बोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अदर बोन्स तो आपको पिसिफॉर्म हर किसी को याद रहता है कि पिसिफॉर्म इज आल्सो अ सिस्मोइड बोन, बट पटेला इज समथिंग दैट यू, कि इतनी बड़ी बोन, एंड समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज कि यार पटेला भी सिस्मोइड बोन था क्या. यस, पटेला इज अ सिस्मोइड बोन. ओके, सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो ये आपको देख के तो पता चली गया है. शॉर्ट बोन्स आर का दिस योर रिस्ट बोन्स, एंकल बोन्स, मैंने आपको बता दिया है. अब ये वो शी लुक्स टू प्रिटी पे अभी मत जाना, क्योंकि जब हम अपर लिम्ब पढ़ेंगे तब हम वो सब कर लेंगे, है ना. ठीक है, बोन्स को नाम याद रखना और उनका ऑसिफिकेशन सब वहां पे आएगा. ओके, अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक पे ही हम फोकस रखेंगे. ठीक है. देन देयर आर अदर पार्ट्स ऑल्सो. सी देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ द बोन्स ऑल्सो, है ना. बोन के अंदर भी हम उनके पार्ट्स अलग अलग देख सकते हैं, जैसे कि नेक क्या होता है ना, मैंडिबल का. देन इफ यू सी हियर फेसेट क्या होते हैं, है ना. देन कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. फोसाज होते हैं कुछ बोन में, है ना. फोसाज होते हैं जहाँ पे दूसरी बोन आके लग सकती है. ओके, आई मीन टू से दे क्रिएट स्पेस फॉर अदर बोन टू मूव. ओके, सो दिस वी ऑल विल टॉक अबाउट इट, बट नॉट राइट नाउ, है ना. इट इज नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो सी what we did, total number of bones,
What is exoskeleton? What is appendicular skeleton? Then we talk about types of bones which everybody know. अगर आपको यहाँ पे लिखना भी है तो देखो लॉन्ग बोन तो सबको मालूम होता है ना, फीमर, ह्यूमरस. शॉर्ट बोन्स में क्या होती है? शॉर्ट बोन्स में आपके कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स होते हैं, राइट? लिखना है तो लिख सकते हैं. ओके, सो जस्ट टू कंप्लीट आवर नोट्स, है ना. एंड फ्लैट बोन्स में क्या होता है? फ्लैट बोन्स में आपके स्टर्नम आते हैं. अगर वो आपसे पूछे एग्जांपल, देन स्टर्नम इज देयर, रिब्स, ओके, your scapula, it will come under this thing, and bones of your skull, they also come under skull vault के जो bone है, they also come under this flat bones. Irregular bones का मैंने आपको एक example दे ही दिया. Other examples are what? Hip bones, they are also irregular bones, है ना. vertebra मैंने आपको बता ही दिया. And bones, very important, in the base of the skull. तो वेरी इंपॉर्टेंट. सर आपने स्कल स्कल 2 बार क्यों बोला? यहाँ पे आप वापस इसको ठीक करें. बोन्स ऑफ द स्कल वॉल्ट, है ना. वॉल्ट की बोन्स, जो स्कल की वॉल्ट की बोन्स है, दे आर योर फ्लैट बोन्स. बट जो बेस ऑफ द स्कल के जो बोन्स है, जो बेस हमारा यहाँ पे चलता है ना, दैट बोन्स, दोज बोन्स आर योर इरेगुलर बोन्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मेक दिस डिस्टिंक्शन हियर इटसेल्फ. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, बेस ऑफ द स्कल. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ टाइप ऑफ बोन्स. अब देखो बेसिक 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 बहुत हो गया, बोरिंग बोरिंग. नाउ वी आर गोइंग इनटू एडवांस स्टफ. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. अगर आपको ये पढ़ना भी है तो वी कैन टॉक अबाउट इट. सी व्हाट आर फ्लैट बोन्स, सबको मालूम है. ठीक है, पैरेलल सरफेस होती है, दैट इज फाइन. व्हाट आई वांट यू टू फोकस अपॉन हियर इज, कुछ कुछ सोर्सेस से हम लेके आएंगे, स्टैंडर्ड सोर्सेस से हम कुछ जो लाइन्स है वो उठाएंगे ताकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहीं के वहीं अंडरलाइन कर सके. ओके, सो सी one more important point is focus here where I am showing you this sutural bones are also known as Wormian bones. तो sometimes you will मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे Wormian bones को एक्सप्लेन करें, and people get confused. तो Wormian bones और sutural bones one and the same thing. Okay, they are also known as sutural bones, Wormian bones same thing. ओके, छोटी छोटी बोन्स होती है, साइज फ्रॉम अ ग्रेन और सेंड टू अ क्वार्टर, दैट इज फाइन. जिक्सो पजल की तरह होती है, आप देख ही रहे हो ये पजल की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है, राइट. सो दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन दिस वर्मियन बोन्स, बट इट्स ओके. इरेगुलर बोन्स, वर्टिब्रा, इट्स फाइन. शॉर्ट बोन्स आपको सबको मालूम है. सिस्मॉइड बोन्स इज फाइन. अभी मैं आपको एक आई वांट टू सेंसिटाइज यू टू अ इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज सिस्मॉइड बोन. Basically, sysmoid bone आते ही you need to understand, you need to tell them the most important line that sysmoid bones are usually small, round, flat. That is fine, but they develop inside the tendons and are most often encountered near joints, knees, hands. We will talk about it, so don't worry about it. But the most important point is they develop inside the tendons of the muscle के अंदर these bones develop. Okay, so and we'll talk about those muscles also कि if patella is developing, it is developing under which tendon. If pisiform is developing as a sesamoid bone, it is developing under in the tendon of which muscle. We'll talk about it. Okay, so sesamoid bones, they develop inside tendons. This is very important points. Okay, okay, so let's go ahead. ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमने बात कर ली है तो we'll talk about long bones के types now. Okay, let me go to it. Okay, so see there are various kind of long bones. एक bone क्या है भाई? सबसे पहले तो important क्या है भाई? long bone सबको मालूम है, femur, humerus, this is your long bone. But क्या long bones भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं? Yes, definitely they can be of various types. So we are talking about long bones के types. Okay, for example, if I say what kind of bone is your clavicle? Okay, this is very important point. In fact, this has been asked in questions various kind of time. Okay, so what is clavicle? So clavicle is nothing but a modified long bone. Okay, it is a modified long bone, है ना. And how is it modified, guys? So you have to say it has a modified shaft, but there is no, usually long bones have medullary cavity, but this bone clavicle has no medullary
cavity. Actually na, clavicle, I should say, in the upper limb, if we consider upper limb, it is the king of aberrant things. Okay, it is the king of unique things, I should say, like this. जब हम when we'll talk about upper limb bones, we'll talk about clavicle, and I will tell you so many points that is unique to the clavicle bone, है ना. It is superficial. Usually long bones are deep within the body, but this bone is superficial. We can actually palpate it, which we can actually touch it, right? So and other points are also there, including this point, that it has no medullary cavity. Other point is it is a modified long bone. So this is very important. Okay, so clavicle bone, you have to remember, it is a modified long bone. So types of bones we are doing, types of long bones we are doing. Okay, so we'll talk about clavicle. So okay, let's talk about the classification. So long bones can be classified in these types. Okay, first is your typical long bones. First is your typical long bones. And what is the description of typical long bones? Like, how will you say that this is a typical long bone and this is your modified long bone? How will you differentiate it? So typical long bones have typically and elongated shaft. Okay, so it's typically long, the shaft is very elongated, है ना, and that shaft, अब यहाँ से अपनी terminologies भी आ रही है. Okay, so that shaft is known as what? That shaft is nothing but diaphysis, है ना. We'll do it, we'll see the picture also, but आप sensitize भी होते चलें. So elongated shaft, that is diaphysis, and also what? And it has two expanded ends, which are, what do we call them? They are epiphyses. Okay, epiphyses. Okay, the shaft, as I said before, while discussing clavicle, the shaft has a central medullary cavity. All right, and there is also a nutrient foramen. Okay, and this is very important. I will again teach it, but since they have written it, है ना, तो हम bookish language पे ही जा रहे हैं. Okay, standard language पे जा रहे हैं. This nutrient foramen typically is directed away from the growing end of the bone. Now this is very peculiar, है ना. Everything has a logic. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता था कि हर चीज़ का एक लॉजिक होता है. एनाटॉमी को ऐसे मत पढ़ो कि यार इन्होंने फैक्ट्स है. नो, इवन बिहाइंड दोस फैक्ट्स देयर आर सर्टेन लॉजिक. अब ये डायरेक्टेड अवे क्यों? वाई न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन? न्यूट्रिएंट फोरामेन से क्या जाता है? द आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, द मेन आर्टरी passes through the nutrient foramen. Now since in order to prevent this damage, in order to prevent the damage to this nutrient artery away from that's why it goes away from the growing end, because suppose the nutrient artery runs very close to the growing end of the bone, this growing end will try to pull the artery and it may in turn damage the artery. So in order to prevent the damage, in order to prevent the nutrient artery from the damage of this growing end of the bone, the nutrient foramen is actually away from the growing end of the bone. Okay, understood? So nutrient foramen, and in turn your nutrient artery is directed away from the growing end, and we'll do this with the mnemonic when we'll study about the blood supply. Okay, तो आपको समझ में आ गया लॉजिक? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. So long bones are this thing, but then second is your miniature long bone. Okay, miniature long bone. So what is this? What is miniature long bone? Miniature long bone is nothing but it contains only one epiphysis. So now you are getting my point, है ना. देखो, बेसिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. In order to understand what is abnormal, you need to first understand what is normal. We understood that long bones क्या होती है? Long bones की एक shaft होती है. There is a long shaft. There are two ends which we call epiphysis. Now this is a typical long bone.
We talked about clavicle, which is a modified long bone. What is modified in that? We talked about that. We wrote in the definition also. Now we are talking about miniature long bone. So how is it different from the typical long bone? We are saying it is different from the typical long bone because it's first of all miniature. So the name itself says. But what is miniature? It only has one epiphysis instead of two, which happens in typically long bones. So miniature long bones only have one epiphysis. So can we give certain example? क्या आपको example मालूम है? फटाफट बोल दो. What are the examples? मालूम होना चाहिए. The examples are metacarpals, right, and metatarsals, okay, and phalanges. So these are your miniature long bones. Sir, can you show the picture? देखो फोटो तो मैं वैसे भी आपको आगे बताने वाला हूँ, बट इफ यू हैव टू सी there is only one epiphysis that you will see. Okay, in fact उसमें हम aberrant epiphysis के बारे में भी पढ़ेंगे. Where is that picture? Let me show you. See, if you see, this is your hand bones. So if you see epiphyseal plate and here, so there is only one side. Okay. So these are your miniature long bones because they only have one epiphysis, है ना. Understood? समझ में आ गया है ना. We'll go to advanced, but अभी पहले थोड़ा सा समझते चलो because there are various students है ना, जो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने इंस्टा पे पूछा भी था कि how shall I go about it. Everybody told me, sir, from the very basic we don't know, and it है ना, डर इसलिए आता है क्योंकि you don't know the basics. तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं. सो now you know, right, typical long bones क्या होती है, you know, modified long bone क्या होती है, you know, miniature long bone क्या होती है, you know, and I have shown you the picture also, so you now have that in visual memory also. What is another type of long bone? So there is third is nothing but your modified, है ना. modified सिर्फ clavicle ही तो है. ओके, और भी है क्या modified long bones? ओके, सो modified long bones का आप पहले ये लिखें, have a modified shaft. This I already told you. I am writing it down is for those people who will be giving university exams, right? So you have to write everything down. तो एक बार आपके सामने ये आ जाएगा. Okay, so only, and later on I can give you this PPTs also. Okay, so and have no medullary cavity. This I already told you. No medullary cavity, and don't get confused. The best example, the one and only example is your clavicle. Understood? तो ये आपका लॉन्ग बोन्स के भी टाइप्स हो गए. तो अब आपको क्या समझ में आ गया? इफ यू जस्ट सिंपली रिपीट इट, आपके सारे एक्सियल बोन्स, एपेंडिकुलर बोन्स, कितनी बोन्स होती है कि हम किसको एपेंडिकुलर बोलते हैं, व्हाट बोन्स कम्स अंडर एक्सियल स्केलेटन, वी डिड इट. देन व्हाट काइंड ऑफ बोन्स आर देयर in that also. Long bones, what types of long bones are there, and their examples we already did with definition and with the basic info. Okay, understood? चलो अब आगे बढ़ते हैं. So see, now it is very easy. Now you know that long bone के क्या क्या part होते हैं. Can you tell me? Already you must be seeing it on your screen. So see, the ends that we already talked about while discussing the typical bone, the ends are epiphysis, right? तो end आपका जो होता है long bones का, they are epiphysis. The shaft, the major shaft, the length of the bone जो आपको देती है, that is your diaphysis. Okay, तो diaphysis your shaft. The inter between the zone, the part of bone which separates epiphysis and diaphysis, that is your metaphysis. Okay, that we call it as metaphysis. So this both the side, है ना, this is your metaphysis. Understood? समझ में आ गया? सबको मालूम है. Okay, but still it does not hurt to repeat it. Okay, तो सबको समझ में आ गया एपिफाइसिस क्या होता है, डायफाइसिस क्या होता है, और उन दोनों के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस. अभी हम बात करेंगे एपिफाइसियल प्लेट के बारे में, ग्रोथ प्लेट के बारे में भी. ओके, बट दिस इज द टिपिकल एडल्ट बोन. जब आपका जो ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज हो जाता है तो देन एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. आई ऑल्सो वांट यू टू फोकस अपॉन दिस थिंग. ओके, सो सी what they are. Medullary cavity, everybody knows about it. Other thing we have to focus upon, see, they are saying spongy bone is also there, in that long bone only there are two kinds of bone that
forms the complete long bone. So that is your spongy bone है ना, spongy, can you see spongy material is there, okay. There are various spaces, spongy, it gives you a look of sponge only. So this is spongy bone, and there is something known as, see outside, there is something known as compact bone. If you see this outside bone, this is your compact bone. There is no spaces, you know, that you are seeing here. We'll go into detail about compact bone, what are harvesian system, what is Walkman's canal, and we'll talk about everything. But you need to go with the flow, okay. So just bear with me for now. So okay, spongy bone, compact bone, इसके बारे में हम बात करेंगे. दिस विल कम अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, है ना. तो क्या स्ट्रक्चर की वो फॉर्म होती है. सो शैल वी टॉक अबाउट इट. अभी आप पहले ये देख लो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके. सो दिस इज योर, सी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, राइट. दिस इज योर न्यूट्रिएंट आर्टरी. I talked about it already. अब आप सबको मालूम है न्यूट्रिएंट आर्टरी runs away from the growing end, and I'll tell you the mnemonic also later on. ठीक है. Then this is the layer periosteum. We'll talk about it. Okay, चलो अब छोड़ो, बाकी तो आपने ये समझ ही लिया ना. Epiphysis is this, then metaphysis which connects epiphysis and diaphysis, you can say like that, okay. Or it is the inter between the zone, okay. तो differentiate भी करने में ये help करता है, okay. Spongy bone and everything, we'll talk about it, don't worry. Okay जी, so let's see what books other standard sources have to say. What are the main points about these zones, okay. तो हमने अभी ये तो देख लिया कि where is epiphysis, where is diaphysis, where is metaphysis, but what are they, है ना. और उनको हमने ऐसे डिवाइड ही क्यों किया. Why did we divide various parts of bone as epiphysis, diaphysis, metaphysis? Certainly there are differentiating factors into them, है ना. So let's see the differentiating factors. First is metaphysis. What are metaphysis? What is metaphysis? It is the site of vascularization. Actually, you have to remember this, metaphysis is highly vascular. I will talk about it again, okay. Clinically correlate हम करेंगे. It is highly vascular, okay, highly vascular. So bone formation and bone remodeling, it is a very active that zone of this thing, bone formation, bone remodeling, okay. So it is highly vascular. In fact, right now only I will tell you those hairpin ends, okay. University people ask you this thing, hairpin ends of the arteries are found here only at the end of metaphysis. So are found in metaphysis, okay. What are hairpin ends? We'll see it, okay. Let me show it to you now only, okay. What are the hairpin ends? Let me show you this thing. See, can you see? ये hairpin की तरह है ना, hairpin की तरह ऐसे they have this hairpin ends. So this hairpin ends are found in the metaphysis only, hairpin arrangement of the arteries. Can you see? Again hairpin ends. Again, can you see metaphyseal arteries have hairpin ends? Sir, what is the correlation of it? Why are you repeating it so many times? Let me tell you. ये hairpin ends, this makes the blood flow sluggish. Can you see now कि ये एकदम ऐसे मुड़ रहे हैं. They have, so the blood flow into them and becomes sluggish. So since blood flow becomes sluggish, you can have bacteria growing into these ends. So how can you relate it to that? Osteomyelitis can be found in this, can start from this hairpin ends, okay. So osteomyelitis जो है आपका वो इसमें हो सकता है. Why? Because hairpin ends have sluggish blood flow. So sluggish blood flow की वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, okay. So this is the clinical correlation to that, है ना. osteomyelitis आप अपने orthopedics में पढ़ेंगे, right. So this hairpin ends is clinically correlated to that disease, okay, that condition. Anyways, चलो आगे बढ़ते हैं. सो हेयरपिन एंड्स आपने समझ लिया. आई विल टॉक अबाउट इट इन ब्लड सप्लाई ऑल्सो, ओके. सो दिस इज योर मेटाफाइसिस, है ना. तो मेटाफाइसिस के बारे में आपने क्या समझ लिया कि सर हमने समझ लिया, बार बार मत रिपीट करो. दैट इज, इट इज हाईली वास्कुलराइज्ड, बोन रिमॉडलिंग, बोन ग्रोथ अकर्स इन मेटाफाइसिस, बोन फॉर्मेशन सॉरी अकर्स इन, it is very actively occurring in metaphysis. So what other thing? The calcified matrix is removed, it is fine, the bone is formed, replaced by lamellar bone. That is not that important, but vascularization is important. What is epiphysis, guys? They are expanded articular ends. Of course they are articular ends, they are the ends, so that's why they will articulate with other bones. Articulation मतलब
एक बोन दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, राइट? सो दे आर आर्टिकुलर एंड्स. They are separated from the shaft by the epiphyseal plate during the bone growth. So this occurs in your not in adult phase, in your childhood phase. This occurs that that epiphysis between epiphysis and diaphysis. Okay, in adult bone you have metaphysis, but in children, in growing bones, what is happening in epiphysis and metaphysis? Between epiphysis and metaphysis there is a plate which we call it as epiphyseal plate or growth plate, क्योंकि वहां पे एक्टिव ग्रोथ हो रही होती है बोन की, वहीं से वो elongate हो रही होती है. ओके, आई विल शो यू द पिक्चर, डोंट वरी अबाउट इट. लेट मी शो यू हियर ओनली. Okay, it's good to see at the same time. Okay, so let me show you the epiphyseal plate. What is this? Can you see this also? This also. What are you seeing? This area. Okay, again this area, this line. Okay, what is this? This is your growth plate. Other name is epiphyseal plate. Okay guys, we'll talk about it and its clinical correlation again after some time. Okay, understood? So आपको समझ में आ गया? So this was your epiphysis. So we talked about metaphysis, we talked about epiphysis. Other important points about epiphysis also we'll do. See, epiphysis is mainly, one second. Epiphysis is composed of mainly spongy bone. This is very important. We'll talk about it. Okay, but okay, it is composed of spongy bone surrounded by a very thin layer of compact bone. What is ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? Spongy bone क्या है, compact bone क्या है? Don't worry about it. The next topic is that only. So just bear with me now. So spongy bone, epiphysis is mostly spongy bone. वो spongy material आपने देखा, that is that surrounded by your thin layer of compact bone. There is something known as proximal epiphysis, that is fine. Enlarged terminal part of the bone, enlarged part of the bone because it articulates. So that is your nearest the center of the body. It is to the, so that is proximal. Distal epiphysis is enlarged terminal part of the bone. Okay, both the parts are enlarged farthest from the center of the body. So see, they have just given it the definitions. Okay, so proximal is what? Anything which is closer to the midline of the body is proximal. Anything which is far from the midline of the body is distal. So for example, and that is also relative. Always understand, NET में कोई एकदम strictly आपको नहीं चलना है. Okay, so this is a relative rule. Okay, let me give you an example. Your arm is proximal obviously as compared to what? As compared to your forearm. Your forearm is distal from the body, distal, away from the midline. So your forearm is distal from the body as compared to your arm. But see, your forearm is proximal to your body as compared to the hand, because hand is distal. सबसे farthest most क्या है? Your hand is the सबसे दूर का इलाका है. So hand is the distal most part. Proximal to that is your forearm. Proximal to that is your arm. Again we can say like this, कि proximal part is your this arm, distal part is forearm, distal most part is your hand. So what I am trying to say here is कि आप ये proximal और distal term फोरआर्म के लिए दोनों टर्म आप यूज कर रहे हैं. वाई? बिकॉज इट इज अ रिलेटिव सिचुएशन, है ना. किसके रिलेटिव में हम पूछ रहे हैं, तो हमेशा ये पूछा करो. कोई भी आपसे बोले कि बताओ भाई ये पार्ट डिस्टल है कि प्रॉक्सिमल है, सर इन रिलेशन टू व्हाट. अगर आप ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ओके, बॉडी के हम मिड लाइन के रूप में मान के चल रहे हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट यू शुड ऑलवेज हैव दिस इन माइंड इन रिलेटिव टू व्हाट, है ना. तो इन रिलेशन टू व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू ट्राइंग टू से, कि वेदर इट इज प्रॉक्सिमल और वेदर इट इज डिस्टल. ओके, अंडरस्टूड. सो दैट इज फाइन. सो दे आर सेइंग कि distal most part, जो आपका जो farther more part है, that also is enlarged of the bone, and your proximal epiphysis is also enlarged. So okay, fine, that is fine. Diaphysis is what? Diaphysis के बारे में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं. It is elongated, it is hollow because it have medullary cavity, so it is hollow. Central portion of the bone located between the metaphysis, both the metaphysis के बीच में ये locate होता है, made up of compact bone mainly. So this is what I want you to focus upon, है ना. Epiphysis, if one thing you have to remember, okay, it contains compact bone also, but if one thing you have to remember, epiphysis is spongy, diaphysis is compact. This is how you have to remember, है ना. It helps you to remember things, even though both things can be found anywhere, but
Epiphysis is mostly spongy, diaphysis is mostly compact. So when we'll talk about compact bone, when we'll talk about harvesian system, when we'll talk about Waxman canal, you have to think in terms of diaphysis, even though it is present in the epiphysis also, but again आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा मतलब diaphysis में maximum ये चीजें होंगी. When we talk about spongy bone, that is your epiphysis, even though it can be anywhere. Okay, तो ये आपको मैंने बता दिया है. Okay, so understood, इतना आपको समझ में आ गया है ना. अब आगे बढ़ते हैं. तो देखो अब बेसिक 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 बहुत सारा हो गया, राइट, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट, है ना. एक बार आप इससे होके चले जाओगे तो ये सीरीज आपको, ये लेक्चर आपको पर्टिकुलरली कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस विल हेल्प इन योर फर्दर लेक्चर्स. ओके, सो दिस वी अंडरस्टूड ऑलरेडी. अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. व्हाट इज नाउ, दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है. आज भी आप किसी से पूछोगे यार कॉम्पैक्ट कैंसलस बताओ, उसके अंदर का क्या टॉपिक है, व्हाट इज द मेन व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर of the bone, है ना, what comes under the compact bone, what is it made up of, है ना, what systems are running in the compact bone, nobody will tell you. And so let us do that also. Okay, so let's talk about compact bone. So यहाँ पे हम पहले bone के structure की बात करेंगे कि how is bone made up of, what is bone made up of. So let's talk about it. Okay, so bone, this we already know, bone mainly contains which collagen, guys? It mainly contains type 1 collagen. This you all know, right? Also, bones are made up of mineralized collagenous, you know, bookish standard language also you need to know. Okay, so mineralized collagenous extracellular matrix होता है उसका extracellular around, very important, around specialized cells. So very straightforward आपकी definition हो गई है. What is bone? टाइप 1 कोलेजन होता है, बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, कोलेजिनस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो मिनरलाइज होता है. विल टॉक अबाउट कैल्शियम, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट विल टॉक अबाउट इट. ओके, कि मेनली क्या होता है. सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन रिसेंटली. सो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कोलेजनाइज, मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और उसके अराउंड, वो किसके अराउंड होते हैं, तो देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल्स. वी ऑल नो अबाउट दोस सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो बोन mainly contains this thing, this we already know. Now let's talk about the elephant in the room, which is the extracellular matrix. Okay, what is it composed of? Extracellular matrix is composed of, first one component of it is organic compound. Okay, organic component, you will talk like that, and then you will say inorganic component is also there, है ना. So now you know कि कहाँ से वो बार बार बोलते हैं bone is made up of calcium, this that. Now you know the basics of it also. There is one organic component which is 30%. It is around 30% of the organic matrix, and that is made up of, the 30% of organic matrix is made up of collagen. So organic compound is collagen. Again I am repeating, type 1. I will make a chart of it कि type 1, type 2, type 3 कहाँ होता है. Basically सबको मालूम है, but type 1 है ना, इतनी बार repeat कर दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं कभी. So type 1 is bone. Okay, so inorganic component. What is inorganic component? The major, okay, the major mineral in the bone matrix is, अब कभी confusion नहीं होना चाहिए, there should be no confusion now. It is your calcium phosphate. Not just here, don't stop here. What calcium phosphate? Calcium phosphate in the form of microcrystalline hydroxy apatite. Okay,
दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो इसको रेक्टिफाई करने की कुछ चीजें तो ऑब्वियसली एनेट है ना, तो कुछ चीजें तो आपको रखना पड़ेगी. बट अगेन यू नो नाउ कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है मेजर, बट दैट ऑल्सो कैल्शियम फॉस्फेट एक साथ होते हैं, राइट. देन अगेन इन द फॉर्म ऑफ वॉट, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सीएपेटाइट. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट. सो दिस इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अराउंड क्या होता है ना, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ओके, सो लेट मी ऐड अ पेज हियर. Okay, so we talked about extracellular matrix. Now you know about it. Now let's talk about the cells also. Let's talk about the cells also. So the specialized, or I think I have the slide also for that. Yeah, here also we can write it. Okay, so the specialized cells, you can see osteocyte, maintains bone tissue, osteoclast, osteoblast, osteogenic cell. We'll talk about it, don't worry. But अभी हम basics से जा रहे हैं. Okay, so specialized cells के बारे में बात करते हैं. First is your good old osteoblast. What is it responsible for? Everybody knows it is responsible for. It is your responsible for the synthesis, not just synthesis, deposition. Not just deposition, mineralization, right? Mineralization of the bone matrix. Okay, ठीक है. The collagen which we talked about is synthesized by osteoblast only. Okay, osteoblast only. ठीक है. This osteoblast get embedded into the matrix to become, okay, this you should know. ये osteocyte क्या है? Don't get confused between osteocyte and osteoclast. Okay, osteoblast cells, please remember this thing. Okay, even though it looks very basic, but people tend to confuse it. Osteoblast cell, once they do all this thing, get embedded. Okay, they get embedded in the bone matrix, the extracellular matrix, to become what? Once they get embedded into the matrix, they become what? They become osteocytes. Okay, not classed, osteocytes. So it's nothing but the osteoblast cells जो आपके embedded हो जाते हैं matrix में, and it becomes osteocytes. Understood? सबको समझ में आ गया? सर तो कुछ function तो होगा osteocyte, it must do something. Yes, definitely, definitely. Osteocyte maintains bone tissue. They have given it here. Okay, we'll write it also. So osteocyte is major. This is a major cell type of a mature bone. So now you can understand, right? Once bone is getting formed, osteoblast cells are doing their work. Once it is completely formed, the osteoblast gets embedded into the matrix. It forms osteocyte. Osteocyte maintains the tissue. There is no need of formation right now, as of now, so it usually maintains the tissue. So naturally आपके एक mature bone में, in the mature bone, the major type of cell becomes osteocyte, right? So that's what they are saying it here. So mature bone, this is a major type of cell, osteocyte. Okay, understood? सबको समझ में आ गया? Again, very important point is about osteocyte is they have lost the ability to divide or to secrete new matrix. This is very important. So now you are understanding, right? This is basic. I know it is boring, it can be boring, but we need to go through the basics in order to get ourselves good, strong in the advanced knowledge of NEET. Okay, so yes, osteoblast is responsible for whatever we talked about it. Osteocyte is the major type of cell. Okay, and osteoblast ही ये है, osteocyte बन जाते हैं, लेकिन वो बन कैसे जाते हैं? वो अपनी ability lose कर देते हैं, अपने super power lose कर देते हैं. They lose the ability to divide or to secrete new matrix. This is your osteocyte. And finally you have your osteoclast. Finally you have your osteoclast, which is responsible. It is responsible
for the local removal of bone during bone growth and better word remodeling osteoclast. सबको मालूम है it helps for the removal of the bone is also necessary for the remodeling of the bone. Okay, so this is what constitute a bone. तो अब आपको bone के बारे में सब समझ में आ गया, right? So bone is an extracellular matrix. We talked about it. It has organic and inorganic component, and it is surrounding the specialized cells. And specialized cells also we talked about osteoblast, osteocyte, and osteoclast. And it is very easy, right? So now there is no confusion between osteocyte and osteoclast. Osteocyte is nothing but osteoblast है वो embedded हो गए तो osteocyte बन गए और उन्होंने अपनी ability lose कर दी. But still they have certain function which is to maintain the tissue, the structure है ना, to maintain the tissue. And osteoclast we talked about it. So if we talk about types of collagen, shall we do it here only? See, they have given it here, but I will make another table, hai na? So we'll simplify it. Okay, this is what the standard sources give, but we'll simplify it. Let's talk about it. I have it in my notes also. So this is what happens. Okay, double notes. एक नोट्स मैं पढ़ते समय बना रहा हूँ, एक नोट्स आपको पढ़ाते समय बना रहा हूँ. Again, if you want this notes, you can text me on the Instagram handle. Okay, just a second. Okay, so we'll type it here, we'll write it here, collagen type, and here locations, and here I'll give you mnemonic also, how to remember it, है ना, once and for all. So first is your type 1. Again, you all know now type 1 is present where? Okay, it is present, imperator में लिख लेता हूँ. Type 1 is present in the bone also, guys, very important. There is a, we'll do in second chapter, we'll talk about joints and cartilages. Okay, so there is a type of cartilage which is name itself tells you it is fibrocartilage. Now fibrous is something very hard, bone like, right? So from that we can remember fibrocartilage is nothing but type 1 collagen. And there are your fascias, you know, muscle tendons, okay, and your ligaments, they all have type 1 collagen. This is very important. So you can remember from bone, you can remember bone 1, है ना, बोन से ही आप रिमेंबर करें टाइप 1 कोलेजन. इवन दो अब मुझे लगता है आप भूलेंगे नहीं. ओके, आई हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स. नेक्स्ट इज योर टाइप 2 कोलेजन. You will remember it with the mnemonic cartilage. Okay, cartilage, ना, cartilage से. So naturally you know the location also, cartilage, है ना, except fibrocartilage. Other cartilage are type 2 collagen, है ना. What other cartilages are? Nothing but hyaline and your elastic cartilage are type 2. Very easy, right? Straightforward, cartilage. Then your third is your type 3. Type 3 you can remember with the mnemonic reticular, है ना. So this will help you understand, even though I'm not a big fan of mnemonic, but sometimes we need it. Okay, sometimes we need them. Okay, so type 3 is your nothing but reticular tissues, है ना, reticular tissue is your type 3. And finally you have very important, है ना, clinically very important type 4
and this nobody forgets after studying medicine, but still you can understand by floor, you know, floor is nothing but floor. What floor? Floor means basement, you know, so your basement membrane, right? Kidney. Understood? Cartilage is also done, you know, sorry, collagen is also done. Cartilage and joints will do in other this thing. So see basics one by one, you know, NET को ऐसे ही करना है. पहले शुरू में you will go through basics and then you will switch to advanced. Once you have started doing advanced and other systems, it will be a cakewalk for you guys. Okay, trust me. So this is done. We talked about extracellular matrix. यहाँ पे भी लिख सकते थे, but I have written it above. That is fine. Now let's talk about very important thing that we were talking about: compact versus cancellous. This is very important, guys. I need you to pay attention over here. Okay, let me show you. Okay, so let's talk about the very important point when it comes to compact bone. हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट इट. ओके, ये तो मैं बताऊंगा ही आपको आपके पैथोलॉजी में कैसे दिखते हैं स्लाइड्स वगैरह, बट अदर देन दैट हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू बोन्स एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. कैन यू सी नाउ व्हाट यू आर सीइंग हियर इज, सी पे अटेंशन, ब्लड वेसल इज देयर, समथिंग दे आर सेइंग हार्वेसियन लेमेला इज देयर, ओके, समथिंग दे आर सेइंग इंटरस्टिशियल लेमेला इज देयर, समथिंग ट्रेपेक्युलर, वॉकमैन्स कैनाल, वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्पंजी बोन यहाँ से शुरू हो रही है, बट अदर देन दैट हार्वेशियन कैनाल, sharpey's fibers are there, sharpey's fiber, very important, sharpey's fibers are there. So let's talk about it in detail. Okay, this is very important. They may ask you this question in your university exams also. In fact, in any exam it can come. So when we talk about compact bone, guys, compact bone के बारे में बात करें तो there is very important topic, the harvesian or harvesian, however you want to pronounce it, system. Harvesian systems are found in compact bone. They are not found in cancellous bones. This is very important. Or spongy bone, है ना, one and the same thing, cancellous or spongy. So harvesian system. What is harvesian system? So what we are talking about is, what is this? This is microscopic picture. Okay, don't get confused. This is microscopic picture of the bone. We talked about macroscopic, we are talking about macroscopic. Okay, so harvesian system, let's talk about it. Okay, if we talk about compact bone, compact bones are composed of, you know, composed of cylindrical structural units. We'll see the picture right now, known as harvesian systems. Okay, or other name, very important, osteons. Okay, each of this harvesian system, very important, each of this harvesian system contains a central canal, guys, we'll talk about it, within which small blood vessels are there, nerves are there. Okay, endosteum, the inner layer, endosteum are also present. Understood? समझ में आ गया? So this is your harvesian system. Now this canal, जो ये canal है ना, this is surrounded by. You need to understand this theory in order to see कि what that picture depicts. Okay? So this canal is surrounded by multiple layers, or what we call it as lamellae, of what? Of calcified matrix. And again, this matrix contains nothing but type 1 collagen. Very easy, right? This is this. Now, how can this canal communicate? So these
canals communicate also with each other. How do they communicate, guys? Very important question. Communicate by Walkman's canal. Okay, so these canals communicate with each other by this Walkman's canal. So this is your harvesian system. Okay, it is important for us to write it all down, okay, in order to understand. Now see, everything is here in the picture what we already saw. देखो, this is harvesian lamellae है ना, concentric laminae are there है ना. So this is harvesian canal. Inside them they have blood vessels, inside them they have nerves, inside them layer of endosteum is also there. Their circumferential lamellae, can you see this circumferential lamellae are there, जैसे वो पेड़ों में नहीं होती है, हम rings count करते थे, so kind of that picture is there. So this is harvesian canal system. Now harvesian system communicate, can you see now? See, this is one harvesian system, this is another. How are they communicating between each other? These communicating channels, this communicating channel, they are nothing but Walkman's canal. So now you are getting my point, है ना. canal इतना सारा हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना. हार्वेसियन कैनाल्स वो हैं जो हमने देखा है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उनके नर्व्स हैं, है ना, सप्लाई करते हैं, बोन को नरिशमेंट देते हैं. सो दे आर हार्वेसियन कैनाल्स. नाउ हार्वेसियन कैनाल कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू व्हाट? Walkman's canal. So this is very important, right? So हार्वेसियन कैनाल, Walkman's canal, these are a part of your compact bone, not cancellous, not spongy bone. compact bone में ये कैनाल चल रहा होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया आपको? ओके, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया है ना. तो अब ये हार्वेसियन सिस्टम वाला पॉइंट आपके लिए वो नहीं रहा है, ठीक है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अगेन सेम पॉइंट है ना, यहाँ पे सेम इलस्ट्रेशन यू कैन सी. इफ यू सी osteon is nothing, they have given it the name, okay, osteon or harvesian system. Circumferential lamellae are there, concentric lamellae are there. This concentric lamellae you can see, this concentric lamellae are there. और ये बीच में क्या है? They are blood vessels, nerves, everything passes through it. Now these blood vessels, they communicate with each other. They communicate with each other through what? So this is your nothing but Walkman's canal. See, within perforating canal. So this is your Walkman's canal. So communication is Walkman's canal, otherwise it is Harvesian system. दैट इज योर कॉम्पैक्ट बोन. ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन है. अब समझ में आया कि डायफाइसिस मेनली कैसा दिख रहा होगा अंदर से. माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आप समझ सकते हो, अपने ब्रेन में सोच सकते हो कि हाँ यार डायफाइसिस विल लुक लाइक दिस, है ना. इट हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज देयर. स्पंजी बोन में तो स्पंजी सेल्स हैं, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अंडरस्टूड है ना, सबको समझ में आ गया. नाउ इफ वी जस्ट हैव टू राइट अबाउट हार्वेसिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको लिख दिया पूरा, है ना. But still, if we have to write कि what is basically spongy bone, so spongy bone is not that important, but even if we have to write about it, we can write it like this: the lamellae are there of the cancellous or spongy bone are arranged in a meshwork, है ना. वो meshwork kind of रहते हैं. honeycombing भी, इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू से हियर, बट स्टिल मेशवर्क आप एक दिमाग में वैसे मान के चलें. द बोन आर अरेंज्ड इन मेशवर्क. अंडरस्टूड गाइस? हैंस दे डू नॉट फॉर्म हार्वेसियन सिस्टम. सिंस उसमें इतने सारे इतने सारे हैप्पैज़ार्ड काइंड ऑफ सेल्स ऐसे अरेंज्ड है, राइट, ऐसे बहुत सारे हैप्पैज़ार्ड सेल्स ऐसे अरेंज्ड हैं. सो देयर इज नो हार्वेसियन सिस्टम. हार्वेसियन सिस्टम फॉर्म करने के लिए उसमें जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है. सो दे डू नॉट फॉर्म हार्वेसियन सिस्टम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, है ना. सो राइट नाउ हियर इटसेल्फ आई वांट यू टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हियर इटसेल्फ you have to remember the diaphysis. Okay, the diaphysis, you are doing it in detail. Now you can be sure about yourself, है ना. थोड़ा सा confidence आपको आने लगेगा that you now know the basics of anatomy, so the general anatomy. So the diaphysis and the outer cortex of the bone, guys, the outer cortex of the long bones are predominantly compact. Very important. So
द आउटर कॉर्टेक्स कितना वो भी हम बात करेंगे, बट आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन, कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला होता है ना, बाहर का कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है, किडनी में भी तो ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। ओके, सो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, तो आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन एंड द डायफाइसिस, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, दे आर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन प्रीडोमिनेटली एंड मेनली। सो वाइल वी टॉक अबाउट, वाइल है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, वाइल इफ वी टॉक अबाउट एपिफाइसिस and inner medulla, okay, inner medulla, they are predominantly spongy. Now you get my point, अब समझ में आ गया है ना? Now you get it कि what is basically bones, what are kinds of bones, what are types of bones, what is it made up of, what is the microscopic structure, what is the hairpin ends, we talked about it, what is the importance of the specialized cells, what is this compact bone, what is this cancellous bone, what are the harvesian system, what is the importance of Walkman's canal, everything now you know, and what part of bone is having this compact structure, microscopic structure, and what part of bone is having spongy structure. This everything you have in your mind now. Okay, understood guys? इतना समझ में आ गया? Let's do other thing, है ना, बेसिक है तो पढ़ लो, एक ही बार रुलाएगा, एक ही बार बोर करेगा, पर इसके बाद ये अच्छा ही करेगा आपके लिए। ओके, सो जस्ट गो विद इट। ओके, दिस वी हैव डन ऑलरेडी, वी डिड collagen also we did. Okay, let's go to the blood supply, it's very easy. Okay, let's go to the blood supply, then we'll talk about the outer layer also. Just give me a second. Okay, so let's talk about the blood supply of the bone. Okay, चलो, तो ब्लड सप्लाई में मेनली एक आर्टरी तो सबको मालूम होती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। नाउ दिस एवरीबडी नोज अबाउट इट। इफ यू आस्क एनीवन, है ना, एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को उठा के बोल दो कि भाई ब्लड सप्लाई किससे होता है, तो बोल देगा न्यूट्रिएंट आर्टरी। पर आपको ये पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम और हर दैट इज इट ओनली द न्यूट्रिएंट आर्टरी विच इज सप्लाइंग द बोन? नॉट रियली, राइट? सो लेट्स सी, are there other parts of nutrient artery which is supplying the bone? What part is supplying what? So we'll come to that. Okay, so let's talk about it. So nutrient artery, and yes, if I have to ask you, you can pause it right now also after I ask. अभी मत कर देना, pause करने पहले question पूछने दो. So which part of the bone, which part of bone is, very famous question, right? Not supplied by nutrient artery, not supplied by nutrient artery, है ना? We'll talk about it. इसके एंड में आंसर आ जाना चाहिए. So let's make a table. And what we'll write it? We'll write it here, the artery, and we'll write it here, the blood supply, है ना? तो what part? Okay, so this you all know that nutrient artery enters to the bone shaft, है ना, through the nutrient foramen. It runs away from the growing end. Everybody knows this, right? Let's talk about other thing, है ना? So first, the main artery we'll talk about. Obviously, nutrient artery is the main artery, so we'll talk about it. The nutrient artery, which regions, है ना, regions of the blood supply of the which regions of the bone? So you have to say, be very careful now. Medullary cavity is supplied by nutrient artery. See, I told you na kitna. So let's talk about it. Inner 2/3 of cortex is also supplied by nutrient artery, and your very important, so I'll write it in different color, metaphysis. Metaphysis. So metaphysis तो basically दूसरे artery भी कर देती, but still nutrient artery also supplies metaphysis. Okay, so medullary cavity, inner 2/3 of cortex, inner 2/3 of cortex. उधर हम दूसरी चीज पढ़ रहे थे outer cortex, है ना, तो वो दोनों में confuse नहीं करना. Okay, so this is your nutrient artery. Okay, then next artery is your metaphyseal artery, है ना. There are arteries, see, can you see? There is something known as epiphyseal artery,
Then you have metaphyseal artery. जो metaphyseal देखो यहाँ पे ये hairpin ends we talked about it, right? So this is metaphyseal artery. Epiphysis और metaphysis के बीच में what is this? Epiphyseal plate है ना, growth plate. Periosteal arteries are also there. बाहर outer layer. Periosteum is your outer layer, right? So periosteum is supplied by periosteal arteries. Okay, so we'll talk about it. वही तो अभी आंसर आ रहा है उसका. Okay, so let's talk about it first. So metaphyseal arteries, let me write it here. So metaphyseal artery supplies obviously metaphysis, along with metaphysis growth plate. It is nearby only, right? So growth plate. Then you have epiphyseal artery, and that obviously supplies epiphysis. It also supplies growth plate because growth plate is nearer to both, you know. Epiphysis above, below is your metaphysis, like that. Okay, finally you have periosteal artery. Periosteal artery, it supplies periosteum plus, guys, inner 2/3 of cortex अगर supply कर दिया है nutrient artery ने, then outer 1/3 of cortex who will supply? So this periosteal artery. So outer 1/3 of cortex of the bone is supplied by periosteal artery. So can you now answer this question? Which part of the bone is not supplied by nutrient artery? The question, it has various options, but basically the answer is this only, and it will be asked also like this only. So the nutrient artery does not supply or nourish outer 1/3, obviously periosteum, पर option में ये था. Okay, so outer 1/3 of cortex. Okay, so option में ये था, but obviously periosteum also is supplied by periosteal artery, and outer 1/3 of the cortex is also supplied by your periosteal arteries. It is not supplied by nutrient artery. So this is very important point, you know. This is very important clinical correlation that you have to understand. Okay, सबको समझ में आ गया? हेयर पिन एंड्स के बारे में मैंने आपको बात कर ही दी है, राइट? हेयर पिन एंड्स, इसका नेमोनिक भी यही करा दूं क्या? सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द न्यूट्रिएंट आर्टरी रन्स अवे, है ना, away from the growing end because it does not want to get damaged, right? So away from the growing end. तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि growing end of the bone क्या होते हैं, right? What are the growing ends of the bone? वो भी अपन कर लेंगे, but anyways this mnemonic is can be used for that also. So the mnemonic is to the elbow I go, away from the knee I flee. To the elbow I go, away from the knee I flee. That means towards the elbow, है ना. So closer to the elbow your nutrient artery is there when it comes to arm and forearm. So upper end of radius ulna, lower end of humerus, your nutrient artery. To the elbow I go, and away from the knee I flee. So upper end of the femur and lower end of the tibia fibula. So this is how you have to tibia, you have to understand. This is how the nutrient artery is there. So to the elbow I go, away from the knee I flee. This is the place where nutrient foramen will be there. If you see a bone, you can see whether it is up and down through the nutrient foramen, है ना. हमको usually जब bone देते थे और कुछ भी समझ में नहीं आता था कि कौन सा up है कौन सा down है. Obviously when you look at it multiple times तो बहुत आसान हो जाता है. But when you don't know anything, then nutrient foramen can help you. Nutrient foramen to the elbow I go, away from the knee I flee. तो अगर वो किस तरफ है उसको देख के आपको समझ में आ सकता है कि ये ऊपर का पार्ट है कि नीचे का पार्ट है ना. बिल्कुल ही नहीं आता है तो अदरवाइज दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बट एनीवेज, सो न्यूट्रिएंट फोरामेन एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी का आपने डायरेक्शन भी देख लिया है. ओके, एंड दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द ग्रोइंग एंड. इफ इट इज टू द एल्बो आई गो, दैट मीन्स ग्रोइंग एंड ऑफ द ह्यूमरस इज व्हाट? Okay, understand. If I am asking you what is the growing end of the humerus bone, so with this mnemonic you can understand nutrient artery will be running away from the growing end. To the elbow I go, that means the
proximal end. Understand now? The proximal end of the humerus is the growing end of the humerus. Right? The proximal end of the humerus is the growing end of the humerus. If I say ki away from the knee I am fleeing, that means growing end of the femur is your lower end of the distal part of the femur is your growing end of the femur. Okay, understand? So this is how you can apply your logic there. Okay, ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. Let's talk about periosteum. Not much to talk about it, but very important. It is very important. Okay, so what is periosteum and what is periosteal reaction? Have you talked about it in your orthopedics? है ना, कोई तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी होंगे, but it's okay. चलो, let's talk about it. Okay, so what is your periosteum? है ना? Can you see now? This outer layer, they are saying this outer layer is your fibrous layer. This is your periosteum. There is periosteum. The outermost part of periosteum is fibrous. The inner part of periosteum layer is also cellular layer. You can say like that. So this is your periosteum. Outer part of this thing is your periosteum. But what is periosteum basically? What is it made up of? Let's talk about it. The periosteum has two layers. भाई मैं आपको बता रहा हूँ. Many people go through the orthopedics also, they pass everything, they don't know that periosteum is divided into two layers. The basics of the basics, the people actually tend to leave this part, but this is very important. Okay, so this will give you confidence कि हमको सब आता है, we know the basic. So the periosteum has two layers. There is outer fibrous layer, as I showed you, right? Can you see? This outer layer is fibrous layer, this layer, and then inside you can see this cellular layer, right? The cellular layer. So outer fibrous layer, it contains what? This is very important. It contains fibroblast cells. So important. We talk about fibroblast cells, right? So these fibroblast cells are present where? It is present at the outer part of the periosteum, or you can say the outer fibrous layer of the periosteum. While there is inner, you call it as inner cambium layer, right? Also known as osteogenic layer. Some of these terms are maybe new to you, but understand this. Periosteum is divided into outer fibrous layer, contains fibroblast, inner cambium layer or osteogenic layer. It contains what, guys? It contains progenitor cells. It contains progenitor cells. These progenitor cells develops into what? Develops into osteoblast. अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे. दिस पेरियोस्टियम लेयर इज सो इम्पोर्टेंट. डोंट इफ नहीं, एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो मेरे को ऐसे याद आते रहता है. विच पार्ट ऑफ द बोन इज हाईली सेंसिटिव टू पेन? It has a lot of nerve endings, right? So you can understand it like that also. It is highly sensitive to pain. So if anything happens, any kind of condition, any kind of disease happens in that part of the bone, it will pain a lot. This is your clinical correlation. जब तक आप आंसर दे रहे हैं तब तक मैं आगे की बात कर रहा था. सोचो इस बारे में, right? So inner cambium layer contains progenital cells. Those progenital cells only develop into osteoblast. Now you can connect those osteoblasts will form synthesize the bone in inner cellular matrix, everything. Once they synthesize the bone, inner cellular matrix, after that they will get embedded in the matrix and they will be known as osteocytes. So now you can understand and link everything, right? So this is very important, right? Periosteum layer is so important. And guys, your answer is this only. By the way, I already told you they get nourishment from periosteal arteries, not from the nutrient artery. Okay, so periosteal artery supplies it. This I already told you, but please understand this periosteum clinical correlation is rich in nerve supply. This is highly rich in nerve supplies, which makes, again I am writing it, periosteum is the most sensitive part of the bone.
Periosteum is the most sensitive part of the bone. So any reaction that we'll see, that Codman's triangle and sunburn, the sun rays eruptions, we'll talk about those periosteal reactions. Those will pain a lot. Okay, so this is your clinical correlation. Okay, so those things will pain a lot, है ना? तो I think I have the picture for that. See, this is your periosteum. See, can you see this outer there? It is coming like this, right? It is swelling. You can see a swelling kind of thing. So this is nothing but periosteal reaction. Again, see, look at this. Okay, this is your periosteal reaction. This bone is coming like this, right? I am erasing it again. So this is your periosteal reaction, and this will pain a lot. Again, if you see here, you can see this blurry margins. Okay, so this is your periosteal reaction. Can you see? Arrows are showing it. So periosteal reactions are painful, है ना? Because it is rich in nerve supply. Periosteum is the most sensitive part of the bone. It is a fibrous layer, है ना? Outer part especially is a fibrous part. Okay, understood. And it also contains fibroblast. Check. See how much detail we went into. We started from what? We started from number of the bones. What is axial and appendicular skeleton? But how much detail have we gone into? How much important, what important points which have been asked in various exams have we discussed already? So it is very important. Again, I am telling you, if you need don't worry about writing everything down. If you want this PPT or this PDF of good notes, I will give you a good notes version of it, so you can edit it down also. Okay, so edit in your own style. So just ask me on the Instagram channel. Okay, anyways, so this is periosteal reaction. See, harvesian system you already know. Now, one very important thing. See how this periosteum has two layers. Now, bone inside is compact and cancellous bone. How is this periosteum layer connected to the inner underlying bone? This is very important, right? So this is how you will never forget it. How is periosteum attached to the underlying bone? So can you see now? This is the best picture that I have got. What is this? This outer blue thing is your periosteum layer. The inner wooden thing, this is your bone. How is it connected? It is connected to these fibers. Can you see these fibers? These fibers are connecting periosteum to the underlying bone. What are these fibers, guys? What do we call them? They are sharpey fiber. Very important, right? So sharpey fiber are there for the connection of the periosteum to the underlying bones. This is how bones are. Periosteum is connected to the underlying bone. Shall I write it down also? Let me write it down. Okay. The importance of sharpey fibers. They are what? They are thick collagen fibers that connect periosteum to the underlying bone. Understood? Okay, fine. Are the sharpest fiber present only in bone? Yes, they are present in bone. Another location is very important location, guys. It is location teeth. Teeth में भी ये present होता है. बस इतना याद रखो. Not that important, but teeth में भी ये present होता है. That's why I shown you this picture also. ये teeth का आपके ये जो part है, यहाँ पे भी आपके जो ये see this छोटे ये जो fibers निकल के जा रहे हैं ना, this alveolar bone और ये they connect कर रहे हैं. So this is also sharpest fibers are also present in the teeth. So this location you have to remember. Okay, understood? आगे सबको समझ में? See how easy it is, है ना? Okay, shall we go ahead? One more small topic is I know the class has been a little lengthy, but it's worth it. The classes will be very. I will make it short from next time, but this basic is important. Okay, so एक साथ कर लो वो ज़्यादा better है. Okay, we'll talk about other bones in other next class. It's okay. So that's it for today, guys. We'll talk about what I have in second part of this video is we'll talk about accessory bone, os trigonum, vecellum, accessory bone के बारे में बात करेंगे. I will show you the picture X-ray also. Then we'll talk about this os trigonum, same thing. We'll talk about sesamoid bones. We'll see the X-ray pictures of the sesamoid bone. Where are they located? Which tendons are they located? We'll talk about that. This we have to talk about, and then
we'll talk about epiphyseal plate and its important, and clinical correlation of it, and types of epiphyses. What are the epiphyses? What is atavistic epiphysis? What are aberrant epiphyses? This we'll talk about. Okay, that's it. After that, ossification. And so second part we'll do this, and then after that we'll do joints and cartilages, and then we'll do some other stuff, and then we'll go with the upper limb. Well, first we'll start upper limb, and trust me, you will enjoy it a lot. We'll do lots and lots of 3D images, 3D models, live models we'll do dissection, 3D dissection we'll do, and you will understand everything. Trust me, just have faith in me and keep revising it. It will be a very limited series that I am going to make, but yes, it will definitely help you with anatomy. Okay, good luck. Bye bye.